Welcome back guys on the political science lecture series on Napier, and today we're going to discuss a very important philosopher, Machiavelli. Niccolo Machiavelli was an Italian philosopher and the name is very famous. Uska usage बहुत common hai. So we're going to discuss some of the nuances of his philosophy. सबसे पहले उसी तरह जिस तरह हम पहले ट्रेंड में डिस्कस करते हैं, his philosophy ideology is realism, his focus is on how to build state, his focus is on statecraft. उससे पहले इंडिया के अंदर चाणक्य की philosophy आती है, which is a very realist and pragmatic philosophy. इसी तरह चाइना, जापान और वहाँ पर भी ये वाली philosophy बड़ी common होती है कि वहाँ पर legal codes develop किए जाते हैं. रोम के अंदर सिसेरो डेवलप्स एंड एडवोकेट्स फॉर अ रिपब्लिकन रूल. इसके बाद हमारे पास थॉमस हॉब्स की फिलॉसफी आएगी, लेविथन की. सो दीज आर सम ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अंडर व्हिच निकोलो मैकियावेली ऑपरेटेड. मैकियावेली के तीन इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं, द प्रिंस, डिस्कोर्सेस ऑन लेवी, द आर्ट ऑफ वॉर. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द आर्ट ऑफ वॉर ऑफ सन त्जू, तो दोनों को आप कम ना करें. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क जो कि हमारे कोर्स से भी रिलेटेड है, दैट इज द प्रिंस. और ये हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे दैट इज फ्रॉम हिज बुक द प्रिंस. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप याद करें कि किताब किस की है, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है. वो कब पब्लिश हुई ये भी आप देखें, तो आपकी एमसीक्यूज की तैयारी भी साथ साथ होगी. अगेन लेट्स डिस्कस द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट अंडर व्हिच मैकियावेली ऑपरेटेड. Machiavelli was an Italian philosopher as discussed, but back in his time Italy was not one country as we know it today. Italy was divided in different fragmented city-states who were vying and competing for power of all of Italy. तो फ्लोरेंस की सेपरेट एक सिटी स्टेट थी, मिलान की सेपरेट थी, वेनिस की सेपरेट थी, नेपल्स की सेपरेट थी. These were all separate city states with different governments of their own, and they were vying for control over all of Italy. इनके अलावा, इन सिटी स्टेट्स के अलावा जो different institutions थे within Italy or in the larger region, they were also claiming control over Italy. So papacy, which is basically church, France, Spain and the Holy Roman Empire, all were trying to dominate Italy. तो basically एक anarchy का समा था इटली में, और कोई strong central leadership नहीं थी कि जो इटली को यूनिफाई करके या इटली को ऑर्डर रिस्टोर कर सके. तो अगेन इन दैट एनार्की के कॉन्टेक्स्ट में मैकियावेली ने किताब लिखी जो कि बहुत ब्रूटल, बहुत कैलकुलेटेड, कोल्ड हार्टेड वायलेंस को यूज करके स्टेट में ऑर्डर लाने को जस्टिफाई करती है. बट कॉन्टेक्स्ट उसका यह है कि चूंकि एनार्की में ऑलरेडी इतना वायलेंस चल रहा था कि मैकियावेली सॉ एक सेंट्रल रूलर विद वेरी स्ट्रॉन्ग आयरन फिस्ट रूल who will use violence and various other methods to bring order to the world. और ये कहा जाता है कि Lorenzo de Medici was the governor of Florence that time. So this book, The Prince, was written as both guide and to win favors from him. So, which is not surprising because authors in history used to write stuff to appease their political masters. तो अपनी The Prince किताब के अंदर वो जितना भी स्टेट क्राफ्ट एक्सप्लेन कर रहा है, बेसिकली इज एक्सप्लेनिंग हाउ अ स्टेट शुड बी गवर्न्ड इफेक्टिवली. एक जो रूलर है, अ वाइज प्रूडेंट रूलर हु ही कॉल्स द प्रिंस एज द टाइटल ऑफ द बुक सजेस्ट, हाउ दैट प्रिंस शुड कंस्ट्रक्ट स्टेट एंड हाउ ही शुड गवर्न दैट स्टेट, और उसको किस तरीके से डिफरेंट चीजों को लेकर चलना चाहिए. उसके अंदर सबसे पहले वो टाइप्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज, टाइप्स ऑफ टेरिटोरीज दैट डिफरेंट टेरिटोरीज दैट अ प्रिंस कैन होल्ड, उनको एक्सप्लेन करता है. वो कहता है कि एक होती है हेरिडेटरी प्रिंसिपैलिटी जो कि आप इनहेरिट करते हो, क्योंकि बाप के बाद बेटे की रूल है तो बेटे ने बाप से जो इनहेरिट की. कुछ होती है न्यू प्रिंसिपैलिटीज जो आप एक्वायर करते हो, व्हिच कैन बी डन थ्रू वेरियस मेथड्स. एक आपने अपनी पावर से कॉन्क्वेस्ट के जरिए हासिल की, बाय पावर ऑफ अदर्स, किसी दूसरे के साथ अलायंस करके उसकी पावर से ली. बाय क्रिमिनल एक्ट्स, एक्सट्रीम क्रूअल्टी, बहुत ज्यादा वायलेंस और शदीद तशद्दुद के साथ हासिल की. या बाय विल ऑफ द पीपल, के आपको किसी नई टेरिटरी में लोगों ने इनवाइट किया, लोग आपको पसंद करते थे एज अ रूलर, और एक सिविक प्रिंसिपैलिटी जिसको वो कहता है कि लोगों की विल से आप बने. देन देयर आर मिक्स्ड प्रिंसिपैलिटीज. दीज आर द प्रिंसिपैलिटीज जो कि एनेक्स की जाती हैं विद इन द एग्जिस्टिंग टेरिटोरीज जो ऑलरेडी प्रेजेंट थी. एंड देन देयर आर एक्लीसियास्टिकल प्रिंसिपैलिटीज जो कि चर्च की प्रिंसिपैलिटीज. एक्लीसियास्टिकल इज यूज्ड विद रिलेशन टू द चर्च. अब वो कहता है कि इनके अंदर जो हेरिडिटरी प्रिंसिपैलिटी है, दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट टू गवर्न. इट इज easiest to govern because जो subjects हैं वो उस family के रूल से already accustomed हैं, because they've been governed by that family for so long. So there's natural disposition
is to love the ruling family. The people and the subjects love the ruling family. तो hereditary principality is the best principality, बेहतरीन principality है जिसको आप जबरदस्त तरीके से govern कर सकते हो आसानी से, for a prince, for a good ruler. New and mixed principalities, अगर तो new और mixed principalities में, इन दोनों में अगर language और customs same है, जो आप नई जमीन टेरिटरी एक्वायर कर रहे हो, अगर उनकी लैंग्वेज और कस्टम्स प्रिंस जिस कस्टम्स और लैंग्वेज से एडहेयर करता है वही हैं, तो दे आर इजियर टू गवर्न. बट अगर उनका लैंग्वेज और कस्टम डिफरेंट है तो दे विल बी डिफिकल्ट टू गवर्न. उसमें फिर आपको होमोजेनिटी लानी पड़ेगी, आपको वायलेंस यूज करना पड़ेगा, कोर्जन यूज करने का, विच मैकियावेली इज ऑल फॉर. इन सिविक प्रिंसिपैलिटीज, वो वाली जो लोगों की विल से बनी है, वहां पर आप क्रूएल्टी नहीं दिखा सकते हर वक्त, बिकॉज वो बनी ही लोगों की विल से, आपकी कोर्जन से नहीं बनी, आपकी पावर और अथॉरिटी से नहीं बनी. अगर वो लोगों की मर्जी से बनी है तो फिर रूलर मस्ट रिटेन पब्लिक ट्रस्ट एट ऑल टाइम्स. Territories which are acquired by one's own power are better than those dependent upon favors of other. One's own power वाली are better than those which are acquired by others' power, because वो आपके करिश्मे से बनी है. तो इसमें वो बताता है कि एग्जांपल भी देता है. So for instance, the territories which are acquired by the favors of others are like those which are acquired by Cesare Borgia, who was the ruler of Italy के अंदर. He was governing a city state, और ये भी was a contender of power in the Italian control over Italy, and he believed कि this model is not sustainable. और हिस्ट्री में मिसाल देता है कि those who acquired territories by their own power are more successful. So for instance, Cyrus the Great in the ancient Persian Empire, Romulus Roman Emperor, तो जिन्होंने अपनी बलबूते पे, अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, अपने कैरिज्मे पे टेरिटोरीज एक्वायर की हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं. Second classification that he does is with regards to types of armies. So he says that there are 4 different kinds of armies for a prince. The first are the mercenaries. Mercenaries वो हैं जो कि hired soldiers होते हैं. तो you give them money and they fight for you. But they are dangerous and unreliable because अगर आपके opponents उसको आपसे ज्यादा पैसे देंगे तो obviously they'll turn against you. Something that in Game of Thrones Bran does. So Bran gets more money from the other party. He says that I'm for a party who is going to give me more money. So that's how mercenaries work. Game of Thrones is an excellent exposition of this whole philosophy that Machiavelli explained. Then the second types are auxiliaries. Auxiliaries are those who are loaned by other rulers. So you have a good relation, alliance with another ruler, and you get those army as loaned by them. They are also dangerous and unreliable, because obviously as soon as their support is cut off, you no longer have this army, so it's not reliable. The third are the native troops, your own indigenous troops, and these are the most desirable kind. So just like Game of Thrones, again, there's the scene where Joffrey Baratheon, when he's not king as of yet, but he refers to the fact that Westeros needs an army of their own, indigenously raised. Mercenaries की उन्हें जरूरत नहीं, because they're unreliable. They need to create a central army of their own. But he's shunned by his mother. But if you look at that idea, it was a very brilliant idea. उसकी ये बात later on proves to be true as well, that had they have an army of their own, they would have been more successful. But anyways, this philosophy is self-explanatory why native troops are more desirable than mercenaries. The fourth are the mixed troops. They are the ones that in which agar native troops की combination with any of the two, native troops combination of mercenaries or native troops combination of auxiliaries. So any combination of native troops with either of these two will result in mixed troops. Machiavelli thought that mixed troops are more desirable than mercenaries and auxiliaries, because kuch portion of native troops unme hoga, but complete native troops are more desirable. So this is the most desirable, the second desirable, and then these two are the third most desirable kinds of armies. Now he talks about what the character of the ruler should be. मैकियावेली का प्रेमिस ये है कि इंसान पैशनेट है, इमोशनल है और रीजनेबल नहीं है, एज अपोज टू प्लेटो. हेंस मैकियावेली बिलीव्स कि चूंकि इंसान पैशन से गवर्न करता है, रीजन से नहीं चलता, इसलिए एक अच्छे रूलर को अपना ऑर्डर रिस्टोर रखने के लिए, आयरन फिस्ट से रूल करने के लिए लोगों के पैशन को मैन्यूवर करना चाहिए अपनी फेवर में, ताकि वो स्टेट को इफेक्टिवली गवर्न कर सके. एंड इन दैट ही attempts to diagnose human behavior and human passion. So he said that there are 4 passions that govern human behavior: love, hatred, fear, and contempt. Love and hatred are incompatible with each other.
इसी तरह fear and contempt are also incompatible with each other. तो कभी भी आपकी love और hatred इकट्ठे किसी के लिए नहीं exist कर सकती, fear and contempt इकट्ठे exist नहीं कर सकता. What are the compatible passions? Love and fear are compatible. Like जैसे आपको अपने parents का होता है. Hatred and fear are compatible. जिस तरह आपको किसी कोई बंदा बहुत बुरा लगता है, उसका hatred भी है, उससे डर भी लग सकता है आपको. Love and contempt are also compatible. Hatred and contempt are also compatible. All of these fears, combination of these passions are compatible. But these two, love and hatred and fear and contempt, are not compatible passions. अब इन 4 compatible passions में से कौन से passions की combination inspire करनी चाहिए ruler को अपने subjects में? He says, और ये मैंने order of preference में ही रखा है, the most desirable is love and fear. If a ruler can inspire both love and fear, that's most desirable. क्योंकि लोग उसे मोहब्बत भी करेंगे, उसे overthrow करने की कोशिश नहीं करेंगे, order रहेगा, और उसे डरेंगे भी, उसके laws को भी enforce करेंगे. So ruler will be like a paternalistic figure. जैसे मैंने आपको बताया कि आप parents से आपको मोहब्बत भी होती है और डर भी होता है, तो आप सबसे ज्यादा उनकी बात मानते हो. That's how a ruler will have a more paternalistic role and most effective governance होगी, क्योंकि आपने manipulate करना है. If you can manipulate using this combination to bring order to society, that's the best. But if a ruler cannot inspire love and fear for whatever reasons, then he should go for hatred and fear. Fear बहुत जरूरी है कि मैकियावेली की फिलॉसफी में कि लोग डरेंगे नहीं जब तक रूलर से, तब तक वो उसके ओबे नहीं करेंगे. जब तक वो लॉस ओबे नहीं करेंगे तो कमांड अथॉरिटी नहीं कर सकता रूलर, और वो सॉवरेनिटी इन्फोर्स नहीं कर सकता अपनी, और उसकी वजह से केओस रहेगा, जिस तरह का केओस मैकियावेली एक्सपीरियंस कर रहा था अपनी इटली के अंदर, जहां पे सारे लोग कर रहे थे. अगर कोई एक सेंट्रल बंदा हो जो फियर इंस्पायर कर सकता हो, तो ये सारी चीजें अवॉइड की जा सकती. द थर्ड कॉम्बिनेशन is love and contempt, and the fourth is hatred and contempt. According to Machiavelli, contempt, any combination with contempt is to be avoided at all costs. क्योंकि जब contemptuous होते हैं लोग किसी के खिलाफ, तो फिर उसके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं और फिर उसकी अथॉरिटी अंडरमाइन होती है, सोसाइटी में एनार्की आती है. फियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसलिए आपको फियर टॉप प्रेफरेंसेस दोनों में मिलेगा और बॉटम दोनों के अंदर आपको कंटेम्प्ट मिलेगा, विच इज टू बी अवॉइडेड. तो गोल क्या है? द गोल इज दैट द रूलर मस्ट एस्टैब्लिश हिज रिट एट ऑल कॉस्ट्स टू अवॉइड एनार्की, टू ब्रिंग एन ऑर्डर, सिक्योरिटी इनटू the society. Machiavelli's perspective on war is that between different states, it is inevitable. War can only be postponed. Because हमेशा इंट्रा स्टेट्स के आपस में अलाइन नहीं करेंगे अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए. द अदर स्टेट, क्योंकि मटीरियलिस्टिक है सारी स्टेट्स एंड इट्स अ जीरो सम गेम. वन रूलर विल ऑलवेज वांट मोर टेरिटरी टू ऑक्यूपाई मोर पीपल. तो अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए सूनर और लेटर you will have to fight another state, because if you postpone the war yourself, the other state is going to impose a war on you, and then you'll have to defend. So you should never postpone a war to your own determinant. You should strike. Obviously आपको हमेशा जंग भी नहीं शुरू कर देनी चाहिए according to Machiavelli कि आप हमेशा preemptively जंग शुरू कर दो. You should fight and attack when you can destroy enemy's advantage, when you're in a better position, when you have strength. And he believed that politics is all about getting and keeping power, and warfare is indispensable to it. Politics is all about ritualized warfare कि आपने warfare की calculation करनी है कि when you should do, how you should do, and how you should protect your country. One of the very important concepts in Machiavelli's philosophy is the concept of virtue. Virtue is a technical concept. It's not like virtue in the modern sense as we use it. This can be loosely translated, because Italian में लिखा गया था ये originally, as leadership qualities. कि कौन सी leadership qualities ruler में होनी चाहिए. It's a particular kind of skill that should a ruler must possess. इसका premise ये है कि ये हम एक morally incoherent world में रहते हैं, in which there is a sharp distinction between what one deserves and what one gets. तो अच्छे लोगों को, deserving लोगों को वो चीज नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए. So nature is not naturally going to bring order in universe. That's what Machiavelli is saying. Anarchy इटली में इसलिए है because nature खुद आके ठीक नहीं करेगी इस anarchy को. Order restore करने के लिए कुछ skills, leadership qualities require हैं जो कि किसी को खुद अपनी personal will के जरिए enforce करनी पड़ेंगी. कोई automatic कुछ नहीं होगा.
So virtue is the quality that enables to face the blows of misfortune and overcome with whatever means necessary. तो प्रिंस के अंदर, एक सक्सेसफुल प्रिंस के अंदर ये फीचर्स होने चाहिए कि ये जो मिसफॉर्च्यून है, ये जो इनकोहेरेंट वर्ल्ड हमने इनहेरिट किया है, कि जिसकी वजह से एनार्की है या मसले हैं सोसाइटी में, उसको उसे whatever means necessary यूज करके उनको इन्फोर्स करना चाहिए. whatever means necessary वो पीछे उसने जिस तरह कि आपने कैसे टेरिटरीज एक्वायर करनी है, वॉर किस तरह लड़नी है, आर्मीज कैसे डिजाइन करनी है, किस तरह आपने लोगों में पैशंस को मैनिपुलेट करना है, वो सारे मीन्स भी उसने बताए हुए हैं. सो अ प्रिंस नीड्स टू बी amoral. There should be no absolute moral standards to which he should adhere. According to circumstances, he should do whatever he pleases. So a ruler should lie if required. A ruler should use force, coercion, violence, but again determining on the situation. इसीलिए जब वो civic principality है तो वहां पर आप ज्यादा cruelty ना show करो, because आपके interest के खिलाफ जाती है. So the philosophy is that ends justify the means. It doesn't matter कि आपने means कौन से adopt किए हैं, if you are achieving your goals, that's all that matters. तो जो मैकियावेली की philosophy in a nutshell, again जो हम चार्ट बनाते हैं हमेशा, वो ये है कि the well-being of the state is the responsibility of the ruler. The ruler's own morality is less important than the good of the state. The well-being of the state can only be achieved should be achieved by any means possible, including deception and intrigue. And a ruler should never use his morality to come in between the larger interest of the state. He will be judged on the basis of results rather than the means he is used. Hence, a prudent ruler cannot and must not honor his words. यानी उसे किसी moral values के साथ, standard के साथ adhere करने की जरूरत नहीं है. But he should make sure that there's an order in his country or in his empire. ये भी एक मैकियावेली की quotation है. Virtue brings ruin while vice brings security and prosperity. So you can see that how he's advocating for a very harsh, manipulative, deceptive. He's like a little finger from Game of Thrones कि आपने whatever means necessary to achieve your ends. इसकी लेगेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत ज़्यादा लोगों को, रूलर्स को इस चीज़ ने इंस्पायर किया. या एकेडमिक्स कैन सी मैकियावेली की जो फिलोसॉफिकल थॉट है, देयर मैनिफेस्टेशन इन वेरियस रूलर्स, हेनरी VIII ऑफ इंग्लैंड, होली रोमन एम्परर्स, Oliver Cromwell, Charles V, Napoleon, all used these tactics that were used in this manual of having a successful statecraft by Machiavelli. The book was acknowledged as an inspiration for various writers, including Marxist figures and fascist dictators. So this is a very important legacy of Machiavelli. Machiavelli was also a product of Renaissance, because prior to Renaissance, religion पे बहुत emphasize किया जाता था, church इस पे बहुत emphasize करती थी, but Renaissance का एक बहुत important feature secularism था. So you can see that Machiavelli is secular in his approach, because he's not adhering, he believes that state should adhere to no religious or moral standard, because this goes against this religious tradition जो कि उस time चल रहा था. He took a more objective and scientific approach to political history, rather than arguing कि there is this larger natural force behind जो कि history को progress कर रही है. Machiavelli did not believe in this. तो इसीलिए उसकी एक cynical approach है जो कि बाद में थॉमस हॉब्स की political theory में translate करती है. तो they are very important relevance to international relations as well, because ये जो political realism है IR में जो आप पढ़ते हैं, वो भी Machiavelli की theory से निकलता है. इसकी क्रिटिक बहुत ज्यादा कॉमन है. Machiavellian behavior, we colloquially refer bad behavior, deceptive and manipulative behavior commonly referred to as Machiavellian behavior. इसके अंदर क्रिटिक की जाती है कि इस तरह के पॉलिटिशियंस जैसे रिचर्ड निक्सन ने फॉर इंस्टेंस यूज किया टू कवर अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, देन यूज्ड हश मनी टू कवर अप द इन्वेस्टिगेशन, एंड वेरियस अदर सच एग्जांपल्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ Machiavellian behavior. तो इसकी क्रिटिक ये की जाती है कि इट्स वेरी वायलेंट, इट एडवोकेट्स अ वेरी ऑटोक्रेटिक, अनजस्ट state model. It is also very anti-democratic, because Machiavelli is all for using violence and using coercion and manipulation. So he's divorcing politics from morality. और इसके मुतालिक अल्लामा इकबाल ने कहा था that Machiavelli was a sharp agent of devil. So you can write that as well. So that's all for today on Machiavelli. In the next lecture, we're going to discuss the social contract theory. See you guys next time. The political science lecture series on Napier, and today we're going to discuss the social contract theory. Social contract theory में तीन important philosophers हैं, Hobbes, Locke और Rousseau, और हम उन तीनों को इस lecture series में आगे देखेंगे. Social contract theory का basic premise
वो एक कॉमन प्रेमिस है, लेकिन उसको एक्सप्लोर तीनों फिलोसोफर्स डिफरेंट तरीके से करते हैं. तो लेट्स सी, let's start with Thomas Hobbes. Hobbes was an English writer, and his philosophy focuses on realism and social contract. Again, as which is pretty obvious. ये उसकी 3 मोस्ट फेमस किताबें हैं, लेकिन हम जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे वो लेवाइथन है. लेवाइथन इज द बुक in which he has explored this concept of social contract. अब एक सीक्वेंस में चलते हैं. हॉब्स की फाउंडेशन जो उसकी कॉन्सेप्ट है फिलोसफी का, वो ये है कि इंसान पहले स्टेट ऑफ नेचर में एग्जिस्ट करता था. स्टेट ऑफ नेचर क्या है? इमेजिन दैट देयर आर नो लॉज, देयर आर नो इंस्टीट्यूशंस, देयर आर नो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स. इमेजिन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, जब कोई भी पुलिस की, किसी भी किस्म की पुलिस, अदालतें, निजाम, लॉज, किंग, क्वींस, ट्राइबल चीफ्स, रूलर्स, म्यूचुअल आर्बिट्रेशन कमिटीज, कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता था. उसको कहेंगे स्टेट ऑफ नेचर. कि इंसान थे, दुनिया में आगे आ चुके थे, they were living, but there was no form of government and law at all. This is what Hobbes calls state of nature. इस स्टेट ऑफ नेचर में फियर और सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा थी, बिकॉज कॉन्स्टेंटली कोई भी बंदा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं था. तो इट वॉज व्हाट हॉब्स इन हिज वर्ड्स कॉल अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल. एवरीवन वाज एट वॉर विद एवरीवन एल्स. मेरा कुछ भी सिक्योर नहीं था, क्योंकि कोई एक कानून नहीं है, कोई रियासत की रेट नहीं है, कोई रियासत एग्जिस्ट नहीं करती जो आके मुझे प्रोटेक्ट कर सके. अगर कोई मुझसे चोरी करता है तो मुझे खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. एंड आई विल बी इन कांस्टेंट फियर कि इससे पहले कि कोई मेरे खेतों पे आके कब्जा कर ले या कोई बंदा मेरे घर पे आके कब्जा करे, तो इससे बेहतर है कि मैं पहले जाके उस पर कर दूं. यू विल बी इन अ कांस्टेंट प्रीएम्प्टिव एक्शन अगेंस्ट द अदर वन. हेंस लाइफ इन स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू हॉब्स वाज सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट. इसी से वो ह्यूमन नेचर के कॉन्सेप्ट को डिड्यूस करता है कि इंसान जो है वो सेल्फ इंटरेस्टेड है. इंसान सेल्फ प्रेजर्वेशन चाहता है और रैशनली ही इज अ रैशनल इंडिविजुअल हु वांट्स टू प्रिजर्व हिज इंटरेस्ट. क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में इंसान के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं होते, किसी के भी नहीं होते. हेंस दे वुड वांट टू रैशनली यूज देयर फैकल्टीज टू मैक्सिमाइज देयर इंटरेस्ट एज मच एज पॉसिबल. हेंस यूजिंग दिस फैकल्टी they developed this concept of sovereign. और इस sovereign के concept में वो क्या करते हैं कि इंसान अपनी, दो लोग state of nature में जब ये realize करते हैं कि वो खुद अपने आप को protect नहीं कर सकते और इससे constantly एक war चल रही है और एक competition चल रहा है लोगों में, तो society mutually agrees कि हम एक third party को अपने अंदर से तमाम political power vest कर देंगे कि ये हमारे दरमियान disputes को resolve करेगा और will को enforce करेगा. So all of our rights are vested in that individual. Thus, the sovereign is born. The ruler or monarch is born. कि आपने एक institution of monarchy, एक institution of rulership create किया, who is the absolute head. और चूंकि इंसानों ने खुद mutually अपनी self preservation के लिए voluntarily agree किया कि हम अपनी सारे के सारे rights, right to protect ourselves, right to use force, right to movement, सारा कुछ हमने इस अथॉरिटी को दे दिया, which is the ruler or a monarch. Now he is going to enforce that will and we do not have any rights of our own now. तो इससे डिड्यूस किया जा सकता है कि हॉब्स वाज अ सपोर्टर ऑफ एब्सोल्यूटिज्म. दैट इज टू से कि जो मोनार्क है हॉब्स के कॉन्टेक्स्ट में, जो रूलर है, ही इज एब्सोल्युटली पावरफुल, ही हैज ऑल द पावर्स. और ये एक बड़ी फेमस कोटेशन है हॉब्स की, दैट लॉ इज डिपेंडेंट अपॉन द सैंक्शन ऑफ द सॉवरेन and the government without sword are but words and no strength to secure a man at all. तो इसलिए उसने बात की कि जो मोनार्क की विल है वही रियल लॉ होगी, वही सिविल लॉ होगा, और वो क्योंकि वो सॉवरेन इन्फोर्स करेगा. अब जब एक मोनार्क का इंस्टीट्यूशन बन गया, और वो किस प्रोसेस के जरिए बना है, जिस प्रोसेस के जरिए आपने वो मोनार्क का बनाया, उसे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहता है. कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जब कोई प्रोटेक्टेड नहीं था, दे म्यूचुअली एग्रीड थ्रू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट टू क्रिएट अ स्टेट, a sovereign which is going to then use his sovereign power. वो आगे से अपनी पुलिस बनाएगा, अपनी आर्मी बनाएगा, जिसके जरिए वो अपनी कमांड इन्फोर्स करेगा. तो वही रियल लॉ है. उसके अलावा इंडिविजुअली कोई बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा लॉ चलेगा. तो इट्स अ वेरी गिवन फैक्ट. हम चूंकि वी लिव इन एन ऑर्डर्ड वर्ल्ड for thousands of years, we have existed under a monarch or an aristocrat or a quasi-democracy, a colonial power, or now a democracy. So we take for granted these government institutions, state institution, courts, law का सारा mechanism.
बट इमेजिन उससे पहले ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी जब, तो तब ये पहली दफा जब वजूद में है, तो हॉब्स उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। द लेवाइथन इज बेसिकली अ क्रीचर, जो कि बाइबल में जिसका जिक्र हुआ है। तो हॉब्स की जो किताब है उसके कवर में ये मोनार्क है और नीचे जो वो क्रीचर है लेवाइथन का, उसका फिगर बना हुआ है और इसके अंदर ये लोग हैं इसके ऊपर छोटे छोटे बने हुए। सो यू सी द सिंबलिज्म इन दिस। और उसके हाथ में देयर इज अ स्वॉर्ड दैट द सॉवरन is like a leviathan, is like this animalistic beast monarch, and he uses his force to enforce his will to bring order। और इस वजह से उस लेवाइथन की, उस मोनार्क की जो बात है वही कमांड है, वही लॉ है, सॉवरन मोनार्क ही गवर्न करेगा। सो इसी से फिर निकलते हैं कि अब जब स्टेट बन गए उस रियासत में अवाम के क्या हकूक हैं। इस वॉलंटरी एग्रीमेंट के जरिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लोगों ने अपना एक रियासत बना ली, एक बीच में मोनार्क बन गया, तो अब आम आवाम की क्या हकूक है। उसी प्रेमिस को यूज करते हुए जो हॉब्स ने पहले फिलोसफी यूज की है, अवाम के कोई हकूक नहीं है। व्हाटएवर सॉवरेन डिसाइड्स इट डज नाउ इज जस्टिफाइड बिकॉज अवाम ने अपने सारे राइट्स दे हैव वेस्टेड इन द मोनार्क। नाउ इट इज मोनार्क up to the monarch to decide what is right, what is wrong, what he should do, what he should not do. So all law is dependent upon the sanction of sovereign. ठीक है, तो अब अवाम के कोई अपने इंडिपेंडेंट हकूक नहीं है। This is again the same quotation. So Hobbes की philosophy in a nutshell, that left ungoverned, men will terrorize each other in a state of nature in which individual will stop at nothing to ensure their own self-preservation and self-promotion. In the state of nature, the condition of man is a condition of war of everyone against everyone. To avoid a descent into the state of nature, man must enter into social contract, submitting to the authority and protection of a sovereign. The sovereign must be an absolute ruler with an indivisible and unlimited power to prevent factional strife and chaos. If a sovereign fails in their duty, the social contract is broken and individual may take action leading back to the state of nature. Hobbes के केस में revolt sovereign के against allow नहीं है, only in one circumstance. Sovereign का काम क्या है कि वो सोसाइटी को ऑर्डर रखे, निजाम में ऑर्डर हो, केओस ना हो। मगर अगर इफ द सॉवरेन, इफ द रूलर फेल्स टू कीप दैट ऑर्डर, ओनली देन पीपल कैन ओवरथ्रो दैट सॉवरेन, फिर स्टेट ऑफ नेचर में जाएंगे, फिर दोबारा से एक नया सॉवरेन क्रिएट होगा। अदरवाइज देयर इज नो अदर वे और नो अदर रीजन व्हाई विद व्हिच द सॉवरेन कैन बी डीथ्रोन्ड। ये आप एक सेपरेट पॉइंट के तौर पे भी राइट्स एंड ड्यूटीज के बाद 5-6 पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। हॉब्स की लेगेसी बड़ी कॉमन सी बात है कि जितनी एब्सोल्यूट मोनार्कीज एग्जिस्ट की हैं वो हॉब्स से इंस्पायर्ड हैं। वो सारी मैंने जो एग्जांपल्स आपको मैकियावेली के अंदर दी हैं वो सारी आप हॉब्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। हॉब्स वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय मैकियावेली इन दैट रिस्पेक्ट, और आपको सिमिलैरिटी भी थोड़ी सी मिलती है इनकी फिलोसफी में, जस्टिफिकेशन में चीज़ों की। तो जितनी भी एब्सोल्यूट मोनार्कीज हम डिस्कस कर रहे हैं पहले, वो आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो हॉब्सियन मॉडल से इंस्पायर्ड है। इवन मॉडर्न स्टेट्स भी आप जो मोनार्कीज में ऑपरेट कर रही हैं, मिडिल ईस्ट में मोनार्कीज हैं, लैटिन अमेरिका में हैं, अदरवाइज जो एग्जिस्ट करती हैं एब्सोल्यूट मोनार्कीज, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज लाइक यूके और नॉर्वे, they are inspired, you can argue, or that they are manifestations of Hobbesian philosophy. इसके बाद जॉन लॉक आता है। जॉन लॉक की आइडियोलॉजी इज अबाउट लिबरलिज्म, ही आर्ग्यूज फॉर रूल ऑफ लॉ। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। इस किताब से इसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी निकलती है। द रेस्ट ऑफ द स्टफ यू कैन पॉज एंड रीड एंड यू कैन राइट समरी में अपने आंसर्स में। लॉक के मुताबिक स्टेट ऑफ नेचर वाज नॉट सो बैड एज Hobbes had argued. He believed कि जब लॉ नहीं था, रियासत नहीं थी, it was a golden age, बहुत बेहतरीन थी, because everyone had absolute freedom to do whatever they decide. तो Hobbes said कि natural condition of mankind was the state of complete liberty to conduct one's life जिस तरह वो चाहते थे। तो state of nature was a golden period. लेकिन लॉक कहता है कि एक मसला था। Hobbes की फिलोसफी में प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। Private property, according to Locke, is that when a person mixes his hard work, his labor in the raw materials. So, for instance, कि अगर आपने एक जमीन है, उसको अपनी मेहनत से काश्त किया है, उसकी काश्तकारी से जो फसल उगी है वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इस तरीके से अगर आपने मिट्टी ली, उसके जरिए आपने कुछ क्राफ्ट से अपनी मेहनत से प्रोड्यूस किया, तो दैट पीस ऑफ आर्ट इज योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। सो दैट्स व्हाट लॉक आर्ग्यूज, दैट ओवर टाइम प्राइवेट प्रॉपर्टी आना शुरू हो गई। प्रॉपर्टी जो थी वो स्टेट ऑफ नेचर में इनसिक्योर थी। स्टेट ऑफ नेचर वैसे तो जबरदस्त थी, लेकिन उसमें सिर्फ एक मसला था कि इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी इनसिक्योर थी, बिकॉज ये तीन चीजें मिसिंग थी। देयर वाज नो एस्टैब्लिश्ड लॉ टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी, देयर वाज एब्सेंस ऑफ इम्पार्शियल थर्ड पार्टी जज
जो कि प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सके कि अगर दो लोगों में डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी के ऊपर तो कोई तीसरा बंदा नहीं है जो उसको इम्पार्शियली आर्ग्यू करके डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सके। एब्सेंस ऑफ नेचुरल पावर टू एग्जीक्यूट नेचुरल लॉज, तो ये जो नेचुरल लॉ है कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी सिक्योर होनी चाहिए, आपकी लाइफ और लिबर्टी सिक्योर होनी चाहिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, कोई इन्फोर्सिंग पावर नहीं है, कोई रियासत की पावर चाहिए उसको इन्फोर्स करने के लिए। तो फॉर दिस रीजन लॉक का प्रेमिस हॉब्स से थोड़ा इसलिए डिफरेंट है। सो लॉक आर्ग्यूज कि man did not surrender all their right to one single individual as Hobbes had argued. He said, but they only surrendered the right to preserve, maintain order and enforce the law of nature. So individual retain their other rights like life, liberty and property are the rights which are inalienable. ये तीन cardinal rights हैं Locke की philosophy में, right to life, right to liberty and right to private property. और इसके नतीजे में जो आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हॉब्स कहता है, लॉक कहता है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अब मोनार्की आपकी या आपकी रूल्स बने, लॉज बने, या जो गवर्नमेंट आएगी, जो स्टेट आएगी, वो इन तीन चीजों को प्रोटेक्ट करेगी। वो इनको, ये इनएलिजिबल राइट्स हैं, इनको वो सप्रेस नहीं कर सकती। इट कैन नॉट सप्रेस एंड टेक अवे आर्बिट्रेरीली, लाइफ किसी की आर्बिट्रेरी नहीं ले सकती, हॉब्स की फिलॉसफी में ले सकती है। दे कैन नॉट वायलेट लिबर्टी, दे कैन नॉट वायलेट प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसको प्रोटेक्ट करना है रियासत ने, इनको वायलेट नहीं कर सकती, जो कि हॉब्स की फिलॉसफी में इससे उल्टा है। सो ही सेज कि जब इंसान ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आपस में एक इम्प्लिसिट एग्रीमेंट किया और एक थर्ड पार्टी की रियासत वजूद में आई, एक मोनार्की का इंस्टीट्यूशन बना, उसके लॉज बने, जब उसमें वेस्ट कर दिए अपने राइट्स, तो उससे तीन चीजें हुई। आपको एस्टैब्लिश्ड लॉज मिले, यू गॉट जजेस टू adjudicate laws and resolve disputes, and the executive powers necessary to enforce these laws was ultimately created. Each man therefore gives over the power to protect himself and punishes transgressors of law to the government that has created through the compact. तो अब अगर किसी ने किसी के साथ ज्यादती की है तो मैं खुद उसका सजा नहीं दूंगा, वो रियासत देगी। तो अगर किसी बंदे ने मेरी प्रॉपर्टी को वायलेट किया है तो रियासत उसको सजा देगी, उसको फाइन करेगी। अगर किसी बंदे ने मेरे फैमिली में या मेरे जानने वालों में किसी के साथ फिजिकल पनिशमेंट की है, उसको फिजिकली नुकसान पहुंचाया है, या किसी का अगर किसी ने माशरे में कत्ल किया है, तो उसका भाई जाके उसका बदला नहीं लेगा, वो अदालत को या उस टाइम पे मोनार्क को कंप्लेंट करेगा और मोनार्क और उनका जज फैसला करके उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको सजा देंगे। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी will be the responsibility of state, and individuals will not enforce the laws, but the state apparatus and state machinery will enforce these laws. Again, it's very obvious in today's world, but it wasn't so much back then. The purpose of government. अब इससे आप डिड्यूस करते हैं कि लॉ के नजदीक गवर्नमेंट का पर्पस क्या है। तो गवर्नमेंट का पर्पस यह है कि टू अपहोल्ड द लॉ एंड प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट्स ऑफ मैन। चूंकि गवर्नमेंट का मकसद ये है, जिस तरह हॉब्स की फिलॉसफी में स्टेट का मकसद ऑर्डर, complete order, absolute order and no transgression whatsoever, तो रियासत जब उसमें फेल करती थी, मोनार्क फेल करता था, then the subjects had the right to revolt against the king. इसी तरह इसमें गवर्नमेंट का पर्पस है कि लॉ को अपहोल्ड करना, रूल ऑफ लॉ जो हमने फोकस डिस्कस किया है कि लॉ की फिलॉसफी में लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। अगर गवर्नमेंट इनको फुलफिल नहीं करती तो फिर गवर्नमेंट की भी वैलिडिटी नहीं रहती एंड गवर्नमेंट कैन बी ओवरथ्रोन आउट ऑफ पावर। सो अनलिमिटेड सॉवरेनिटी इज कॉन्ट्ररी टू नेचुरल लॉ अकॉर्डिंग टू लॉक। अनलिमिटेड सॉवरेनिटी नहीं है, इट्स अ लिमिटेड सॉवरेनिटी, इट इज कंडीशनल सॉवरेनिटी बेस्ड ऑन वेदर दैट सॉवरेन गवर्नमेंट, सॉवरेन मोनार्क इज एबल टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स और नॉट। तो लॉ की बेसिकली ये फिलॉसफी का क्रक्स है कि ह्यूमंस आर रैशनल इंडिपेंडेंट एजेंट्स विद नेचुरल राइट्स. They join political society to be protected by law, which is social contract, or the end of law should be to preserve and enlarge freedom. This is a quotation by Locke. Locke की legacy दुनिया की तमाम आप कह लेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स हैं वो लॉक की फिलॉसफी में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो दो चीजें इंस्पायर की थी, अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन और डच रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय हिज फिलॉसफी. अमेरिकन रेवोल्यूशन तो इस हद तक कि थॉमस जेफरसन ने ऑलमोस्ट इसके वर्ड्स कॉपी किए थे. सो लाइफ, लिबर्टी एंड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, जो प्रोटेक्शन थॉमस जेफरसन ने अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में यूज किया है. वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल men are created equal, that they are endowed by their creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. It's a
It's a complete reflection of Lockean philosophy. तो थॉमस जेफरसन अमेरिकन फाउंडिंग फादर वाज इंस्पायर्ड बाय लॉक. तो ये उसकी लेगेसी, आप अमेरिकन रेवोल्यूशन, डच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन इसके अंदर कोट कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी रिपब्लिक्स हैं वो आर मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉक का आइडिया विच आर्ग्यू फॉर अ रूल ऑफ लॉ. लास्ट इज रूसो. रूसो इज more democratic. His philosophy is more on republicanism and is focused on general will, which is we're going to discuss. इसकी किताब का नाम ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऑब्वियसली इस किताब के अंदर इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली आइडिया को डिस्कस किया है. While there are some discussion in this book as well, discourse on the origin and basis of inequality among men. So Rousseau के नजदीक state of nature was the perfect time. Rousseau is a romantic philosopher. He's romantic philosophy है, so he appreciates nature, beauty, impulsive spontaneity. ये चीजें रूसो बहुत अप्रिशिएट करता है. तो इसीलिए उसके नजदीक जब कानून, रियासत कोई चीज नहीं थी तो इंसान बेहतरीन दुनिया में जिंदगी गुजार रहा था. इट वाज अ परफेक्ट टाइम. इट वाज इनइक्वालिटी अमंग ऑल मैन. कोई भी आर्टिफिशियल चीज ने इंसान को टार्निश नहीं किया हुआ था. इंसान जबरदस्त जिंदगी गुजार रहा था. बट एज ओवर टाइम पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, इसकी वजह से द मीन्स विद विच पीपल कुड सेटिस्फाई देयर नीड्स हैड चेंज्ड एज वेल. आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल फैमिलीज बनी, फिर स्मॉल कम्युनिटीज बनी, डिवीजन ऑफ लेबर आई, फिर फैमिलीज के अंदर और सोसाइटीज के अंदर. लाइफ आहिस्ता आहिस्ता आसान होना शुरू हुई. लेजर टाइम लोगों के पास ज्यादा आना शुरू हो गया. दिस लेजर टाइम inadvertently led people to make comparisons between themselves and others. Hence इस तरह की फीलिंग्स और पैशंस जनरेट होना शुरू हुए, लाइक एनवी, शेम, प्राइड एंड कंटेम्प्ट के जो आपसे बेहतर था आप उसके कंपैरिजंस ड्रॉ करने लगे. मोस्ट इंपॉर्टेंटली अकॉर्डिंग टू रूसो, like John Locke, is that private property was invented, which was a pivotal moment in history according to Rousseau. कि इसने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की इन्वेंशन से इंसान ने सिंपल प्योर स्टेट ऑफ लाइफ से एक ग्रीड, कंपटीशन, वैनिटी, इनइक्वालिटी वाली जिंदगी में कदम रखा. Important point of distinction is that for both of them, private property का invention is very important. But Locke think positively of private property and he thinks it should be protected at all costs. While Rousseau also thinks private property should be protected, but he contempts it because he's a romantic, because he's a naturalist, because he appreciates beauty. तो वो materialism से generally he despises materialism. So Rousseau is like, ठीक है, it was a necessary evil that we now need to protect, but Rousseau does not appreciate private property and he thinks that it was a fall from grace out of the state of nature. So ये distinction है इन दोनों के दरमियान on private property का matter. But Rousseau की philosophy में एक fundamental distinction ये है कि हॉब्स कहता था कि इंसान ने सारे rights submit कर दिए to the ruler. Locke कहता था सारे rights नहीं किए, सिर्फ right to protection of life, liberty और private property किया. और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए और रूलर मस्ट प्रोटेक्ट देम एट ऑल कॉस्ट्स, नो मैटर व्हाट पीपल थिंक. बट रूसो थिंक्स दैट अ रूलर को गवर्न करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल. सो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट इज क्रिएटेड बाय रूसो, बिकॉज ऑल पीपल कम टुगेदर टू क्रिएट दिस कॉन्ट्रैक्ट, हेंस देयर राइट्स आर नॉट वेस्टेड इन अ सिंगल इंडिविजुअल बट टू द कम्युनिटी एज अ होल. तो इसका मतलब इन सिंपल वर्ड्स दैट Rousseau was advocating for a democracy, for a republican form of government. And hence Rousseau की philosophy में है कि जो law है उसको necessarily लोगों की will की reflection होनी चाहिए. Again, a democratic principle that law should be the one जो कि अवाम की wishes की नुमाइंदगी करता है, जो कि democratic principle है. Very simple. वो लॉज और वो स्टेट्स जो अवाम की जनरल विल से कंफॉर्म नहीं करते उनको डिस्कार्ड होना चाहिए. हॉब्स के नजदीक जो ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकता सॉवरेन, उसको डिस्कार्ड होना चाहिए. लॉक के नजदीक जो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं करना सकता उसको डिस्कार्ड होना चाहिए. रूसो के नजदीक जो अवाम की विशेष के मुताबिक हुकूमत नहीं है, रियासत नहीं है, कानून नहीं है, उसको डिस्कार्ड होना चाहिए. सो बेसिकली द मेजॉरिटी व्यू शुड बी एक्सेप्टेड इन फेवर अगेंस्ट द माइनॉरिटी व्यू. तो ये बेसिकली रूसो का पूरा आइडिया है. उसके लिए ये स्टेट, लॉ, सॉवरेनिटी, जनरल विल और इंटरचेंजेबल टर्म्स. अगेन रूसो ने भी अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया और ये उसकी बड़ी फेमस कोटेशन है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, कि लॉ ने इंसान को किस तरीके से कंटेन किया. दिस इज द चार्ट, फ्लो चार्ट जो कि आप देख सकते हैं ऑफ हाउ बेसिकली रूसो आर्ग्यूज के सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से क्रिएट होना चाहिए. I'm flashing this slide. It's pretty self